everyone. So let's start with the new chapter, adjectives. Let's begin. Chapter 8, adjectives. Let's learn. A word used with a noun to describe or point out the person, animal, place, or a thing, which the noun names, or to tell the number, color, or quality. For adjective. You have to read the following sentence. Ravina is a clever girl. Man has a white horse. Mother bought 5 mangoes from the market. There is some sugar in the jar. Giraffe is a tall animal with a long neck. In sentence 1, the word clever हमें describe कर रहा है girl Ravina. In sentence 2, the word white हमें describe कर रहा है color of the horse. In sentence 3, the word 5 describes the number of mangoes. In sentence 4, the word some shows the amount of sugar. In sentence 5, the word tall and long ये हमें describe कर रहा है size of the giraffe and its neck. So we may define an adjective as a word जो noun को describe करता है. Read the following sentence. Amit gave some fruits to the poor beggar. Beggar was poor. तो ये उसकी क्वालिटी है. तो वर्ड पुअर जो है इस सेंटेंस के अंदर, इन सेंटेंस 1 वर्ड पुअर हमने यूज किया बेगर से पहले एज एन एपिथेट या फिर एट्रीब्यूट. तो इट इज देयरफॉर सेड टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली लाइक बिफोर नाउ. लेकिन सेंटेंस 2 में वर्ड पुअर हमने यूज किया आफ्टर द वर्ड was that forms the part of the predicate. So it is therefore said to be used predicatively. Noun के बाद. Some adjectives को आप यूज कर सकते हो only predicatively. For example, child is afraid of ghost. We are quite well. Now comes the kind of adjectives. Adjectives को आप divide करते हो, बहुत सारे kinds होते हैं इसके. सबसे पहले हम पढ़ेंगे adjective of quality. They are also called descriptive adjectives. Descriptive adjectives बताते हैं तो डिस्क्राइब करते हैं उसकी क्वालिटी में उसका काइंड, शेप, साइज, कलर, पर्सन का और थिंग का आ जाता है. जेंटलमैन, क्लीन सिटी, ओल्ड बिल्डिंग, व्हाइट काउ, प्रिटी गर्ल. फिर आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड होते हैं प्रॉपर नाउन लाइक इंडियन टी, फ्रेंच वाइन्स, बंगाली स्वीट्स, पंजाबी डांस. दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ये हमें बताते हैं अमाउंट ऑफ थिंग्स के बारे में. लाइक फॉर एग्जाम्पल सम शुगर, मच एक्सपीरियंस, इनफ टाइम, लिटिल मिल्क, नो सेंस. एडजेक्टिव ऑफ नंबर दैट टेल्स यू द एग्जैक्ट नंबर नोन एज न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसको हम स्पेसिफाई करते हैं नंबर ऑफ पर्सन या फिर थिंग्स को. जैसे हमें बताते हैं इन व्हाट ऑर्डर एक पर्सन या थिंग स्टैंड करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल 5 एप्पल्स, फ्यू थिंग्स, मेनी पीपल, सेवरल बुक्स एक्सेट्रा. अब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के भी काइंड होते हैं 3. एक होता है डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव जो आपको एग्जैक्ट नंबर बताता है, जैसे 1 कैट, 2 बॉयज, 5 एप्पल्स. ये होते हैं कार्डिनल्स. फर्स्ट बॉय, सेकंड रो, थर्ड पैराग्राफ, ये होते हैं आपके ऑर्डिनल. कार्डिनल्स डिनोट करते हैं हाउ मेनी और ऑर्डिनल्स डिनोट करते हैं विच या फिर थिंग्स का ऑर्डर एक सीरीज में. इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हमें डिनोट नहीं करते एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि ऑलरेडी इसका नाम है इनडेफिनेट, मींस वो एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं बताएंगे. तो जैसे कुछ टी, सम टी, एनी मनी, मैनी टॉयज, ऑल बुक्स, फ्यू वर्ड्स, सेवरल बर्ड्स, सर्टेन बॉय, नो वाटर एक्सेट्रा. फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. ये रेफर करता है ईच वन ऑफ अ नंबर. लाइक फॉर एग्जाम्पल ईच गर्ल, एवरी बॉय, आइदर पेन, नाइदर पर्सन. सेम एडजेक्टिव भी हम यूज कर सकते हैं क्वांटिटी और नंबर को शो करने के लिए अकॉर्डिंग टू इट्स यूज. लाइक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है शी एट सम राइस, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ. एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, ऑल मेन मस्ट डाई. फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे पास यूज करते हैं पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग नेम. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस बॉय, दैट गर्ल, दीज काउज, दोज ट्रीज. नोट दिस और दैट हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए और दीज और दोज हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन. फिर आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. इन्हें हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे कि व्हाट, व्हिच, हुज. तो हम इनसे नाउन्स के साथ हम इन्हें यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस पुट अप करने. दे आर नोन एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. नोट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जिसको हम यूज करते हैं इन जनरल सेंस एंड व्हिच इन अ सिलेक्टिव सेंस. Now let's do the worksheet 1. Underline the adjective in these sentence and हमें इनके kind बताने हैं.
stand aside, let these people pass. तो these आपका हो गया demonstrative adjective. They are too poor to afford enough food to eat. Poor is a again adjective of quality. It is he is deeply ashamed of his rude behavior. That is rude again adjective of quality. He should be given a second chance to qualify the test. Second will be adjective of number. That train is bound for Chennai. That is again demonstrative. Like this, you have to complete the rest of the part. Then we come here to comparison of adjective. You have already learned about comparison of adjective in your earlier classes. Here we will revise them quickly and learn some rules as well. There are three degrees of comparison. First is positive degree. Positive form of an adjective is used merely तो हम noun या फिर noun को describe करते हैं comparison with other similar nouns. For example, Delhi is a big city. Delhi is as big as Mumbai. So here Delhi is a big city and as big as Mumbai. So here it is a comparison. कंपैरेटिव डिग्री इज कंपैरेटिव फॉर्म एक एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं जब हम दो चीजों के बीच दो नाउन्स के बीच में वी आर कंपेयरिंग लाइक फॉर एग्जांपल अमृता इज टॉलर देन सुरभि so we have used the word taller. Suppose Surbhi is 5 feet tall and Amrita is 5 feet and 2 inch tall. So it means कि अमृता taller है सुरभि से. Superlative degree means superior. Superlative form adjective का हम यूज करते हैं कंपैरिजन जब दो से ज्यादा से होता है. Like from the whole class, if you are comparing it with the whole society, whole country, whatever. Priya is the smartest girl in her class. So we are comparing it with the entire class. So we have used the EST word smartest. This means that there are many girls in Priya's class, but none of them is as smart as Priya. इसलिए प्रिया सबसे ज्यादा स्मार्ट. Now formation of the comparative and superlative degree. Comparative and superlative डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की वो कुछ अलग अलग तरीके से बनती है. लाइक बाय एडिंग सफिक्स हमने किसी में er ऐड किया, किसी में est ऐड किया to frame the positive degree. Like for example, positive है bright, brighter, brightest, clever, cleverer, cleverest, great, greater, greatest, hard, harder, hardest, short, shorter, shortest, young, younger, youngest. इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स होता है ई में तो हम सफिक्स ऐड करते हैं आर और एस टी. लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नॉबल, नॉबलर, नॉबलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट. अगर पॉजिटिव डिग्री एंड होता है कॉन्सोनेंट वाई से तो हम वाई को ड्रॉप कर देते हैं, सफिक्स ऐड करते हैं आई ई आर एंड आई ई एस टी. लाइक फॉर एग्जांपल बिजी, बिजियर, बिजियर, dirty, dirtier, dirtiest, happy, happier, happiest, heavy, heavier, heaviest, lovely, lovelier, loveliest. Exception is words shy, sly, spry, wry. ये exceptions होते हैं स्टोरी के क्योंकि they simply take the er and est to make comparative and superlative. And shy will become shyer, shyer. अगर पॉजिटिव एंड होता है ना वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट तो फाइनल कॉन्सोनेंट डबल्ड हो जाता है बिफोर एडिंग द सफिक्स er और est को ऐड करने से पहले. लाइक बिग तो डबल जी हो गया बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिन. एक्सेप्शन है वर्ड्स मीगर एंड नेव. ये एक्सेप्शन है इस रूल के क्योंकि वहां पे मोर एंड मोस्ट लगता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री. By adding more and less or most or least भी हम ऐड करते हैं. We use this method most adjectives of 2 syllables या फिर सारे adjectives हो जिसमें दो से ज्यादा syllable. पॉजिटिव में ब्यूटीफुल, कॉशियस, डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव, यूजफुल. तो ये वर्ड में हम यूज कर रहे हैं मोर ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, लीस्ट ब्यूटीफुल.
More cautious, less cautious, most cautious, least cautious. More difficult, less difficult, most difficult, least difficult. More expensive, less expensive, most expensive, least expensive. More useful, less useful, most useful, least useful. By irregular construction, like कुछ adjectives हम form करते हैं अपने comparative और superlative form को irregular manner में, like bad, worse, worst, words ही change हो जाता है. Good, better, best, you, much, many, more, most, far, farther, farthest, farther, farthest, little, less, least, old, older, old, elder, oldest. नोट एल्डर और एल्डेस्ट हम यूज तब करते हैं जब कंपेयर करते हैं एजेस इन फैमिली और अ क्लैन. जैसे वी कांट से एल्डर देन, बिकॉज एल्डर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है. अगर हम रियल ब्रदर सिस्टर सन्स और डॉटर्स की बात कर रहे हैं तो ओल्डर देन यूज. माई फादर इज द एल्डेस्ट ऑफ हिज सिबलिंग्स. माई सिस्टर इज ओल्डर देन मी बट आई एम ओल्डर देन योर सिस्टर. माई डॉग इज ओल्डर देन योर्स. लिटिल को हम यूज करते हैं जब साइज हम शो करते हैं. लिटलर लिटलेस्ट फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन. तो स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट मोर कॉमन है, लिटलर लिटलेस्ट नहीं. तो हमें कभी क्वांटिटी की बात करते हैं तो लिटिल लेस लीस्ट हम यूज करते हैं, लिटलर और लिटलेस्ट कुछ नहीं होता. सिमिलरली जब अर्ली और लेट हम यूज करते हैं टाइम के लिए तो अर्लियर और अर्लीस्ट हम यूज करेंगे और लेटर लेटेस्ट. फॉर्मर अब ऑपोजिट होता है लेटर का. तो ये दोनों एडजेक्टिव्स को कोई भी पॉजिटिव और सुपरलेटिव हम इसका नहीं बनाते हैं. लास्ट एक ऑर्डिनल नंबर है. बहुत मच जिसको हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मेनी हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ. तो उनका सेम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है, मोर एंड मोस्ट. फार्दर, फारदेस्ट ये हम यूज कर सकते हैं डिस्टेंस के केस में. आई कैन रन फार्दर देन यू. न्यूयॉर्क इज द फारदेस्ट ऑफ लंदन एंड टोक्यो फ्रॉम दिल्ली. फर्दर एंड फर्देस्ट यूज होते हैं अदर कंपैरिजन के लिए, इन पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू. दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, हिज हाउस इज फर्दर डाउन द रोड फ्रॉम माइन. Further I travel to the east within India is Ranchi. Going further back in time, we find evidence of man behaving like an animal. Further, that one can push back the invention of the wheel is a 6 millennia ago. He won't be helping us in any further. Let's do the worksheet 2. Take the correct form of adjectives given in italics sentences. She is the dash person in this room, most capable. Aditi looks dash than her brother, smarter. My sister is the youngest in the family. The new table is dash than any the old one, heavier. Which is more dash, a tortoise or a snail? Lower. Delhi is more dash than any other big city in India, more polluted. Like this, you have to correct the rest of the parts. Complete the sentences with suitable or superlative or comparative degree we have to use. She is the dash of the two sisters. She is the tallest, right? Prettiest. He is the dash and everyone else in the class. He is more intelligent. I am learning to play tennis and it does not seem as easy as I had imagined it would be. I am dash at maths now than I used to be. I am weaker at maths at now than I used to be. Like this, you have to, okay. So this story is dash than that, better. I am the dash member in the family, youngest. So like this, you have to complete the rest of the parts. Next comes to the next. Fill in the blanks with the correct form of adjective given in brackets. Don't forget to use the appropriate articles if there is required. Mohan Bagan Football Club played dash than the East Bengal Football Club yesterday. Played worse than the East Bengal Club yesterday. Cats are not dash than dogs, not more intelligent. Trigonometry is dash than geometry, more difficult. The dash desert of all is the Sahara and it's in Africa. The hottest.
Who is dash person in your family? Who is the talkative? Most talkative. So like this, you have to fill the rest of the part. Then comes answer these questions using superlative or comparative forms of the adjectives. Which is the longest day in a year? Summer. Solstice is the longest day in a year. Which is the smallest bird in the world? Hummingbird is the smallest bird in the world. Like this, you have to complete the rest of the parts of the given exercises. We will meet in the next video. Bye bye. Take care.